Okay, so AMPHIS, and this belongs to the category of the hybrid neurophysi systems, right? As I told you, AMPHIS starts or stands for Adaptive Neurofuzzy Inference Systems. Okay, so before we start with the AMPHIS structure, I just want to know that how many of you have studied neural networks earlier. अच्छा जी पहले भी सवाल पूछा था लेकिन I'll just ask this again. Okay. Anyone else? Aisha के अलावा और फिर some basic concepts. Okay. Okay. So Avais is left. So Avais, आप बताएंगे? Okay, that's great. So let me just very quickly go over the basics of that, of neural networks, and then we'll come to the adaptive neural system. Um, so what is a neural system? A neural system is primarily modeling the working of a neuron. Okay, so working of a neuron. That's what, and primarily the way the information is processed in case of a neuron. This is a biological neuron that I'm talking about. So this is an effort, neural networks, artificial neural networks, to model the working of a neuron. Okay, so what happens in case of a biological neuron? So in case of a biological neuron, what you have is that you have the processing of a biological neuron is such that chemical concentration of different ions actually changes inside the body and and while flowing through a neuron. So as a result, what happens is that the signal actually processes or moves from one part of the body to the brain. So let's say if you touch something with your hand, then the sense of, let's say if you touch some hot substance or hot surface को आप touch करते हैं, so as a result क्या होगा? The sensation of hotness would primarily would first be captured through some sensors that are present at your skin, and those sensors then take that information, and that information or that information on that signal that you get is processed through your nervous system, and it reaches your brain. And as soon as it reaches your brain, the brain then processes this information, and then the information, some sense about that information is being is developed, and then some recommendations are made or some decisions are made based upon that sense that has been developed. Okay, so this is how your nervous system. So there is a receptor end. So you receive some information from the environment, and then there is a processing end, which is primarily your brain.
and in between you have got multiple sets of neurons that are connected together. Okay. So there are multiple neurons. So you have, let's say, a set of neurons that are connected together. So one neuron is connected to another neuron. So I'll be representing a single neuron with a circle here. So information from one neuron moves to another neuron, and then to another one, and then to another one, and finally it reaches the brain. Okay. So the flow of information that takes place inside a neuron, this is what is being modeled in artificial neural networks. Okay, and the architecture that these neurons are present in, that architecture is modeled by what you call as multi-layered neural system, or it's also called multi-layered perceptrons, right? So without going into the details of the mathematical aspect, I'll just very quickly uh, give you the mathematical model of a neuron, because that is something which is important from our perspective. The biological perspective is also important in order to understand the complete working of a neural artificial neural network. But let's just start with the mathematical model of that. Okay, so we'll start with the working of a single neuron. So let's say, and I'll start with the help of an example so that it becomes clear. So let's say I've got a binary classification problem. A binary classification problem may you actually try to develop a classifier that separates out the two classes. Okay. So let's suppose कि आपके पास ये कोई data set है जिसमें crosses और dots हैं, circles हैं. Circles are representing one class and crosses are representing another class. So what would a classifier look like in this case? Okay, anyone? What would a classifier look like? When I say look like, that means that what do you expect that a classifier would do here? A classifier would primarily separate out the two classes for you, would develop a model कि जिस मॉडल को यूज करते हुए you can actually find out कि class 1 किधर है. So we can call this as class 1. So let's call it class 1. और class 2 कैसे separate out हो सकती है? ठीक है जी. Okay. So how can you separate out class 1 and class 2 here? It's a linear classification. ठीक है, fine. आपने linear classification आपने डाली, but that linear classification would mean that it's actually a straight line, or straight lines जो हैं mean कि if I am able to draw a line between these two classes, a straight line, then I can say that, okay, above this line you have class C2 and below this line you have class C1. And because I have a straight line that separates out the two, therefore I can actually say that it's actually a linear classification. लेकिन ये जो linear classification है, this is actually a line, or I can represent this line with the help of a straight line equation. ठीक है, और straight line equation से मैं इसको represent कर सकता हूँ इस line, right? So in simple terms, I can have y as my output. This y is equal to
wx, where w is, we'll come to this point later on, wx plus c. So this is a generic straight line equation. ठीक है, जहां पे x जो है वो आपकी इनपुट है, w और c क्या है? नो, आई मीन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में w क्या है? आई मीन फॉरगेट अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स फॉर अ व्हाइल. ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. ठीक है, सो इस केस में w क्या है? व्हाट इज w रिप्रेजेंटिंग हियर? नो, w इज नॉट अ कांस्टेंट. इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है? c. ओके, सो c इज अ कांस्टेंट. ठीक है, और w क्या होगा? w is the slope. Exactly. So w is the slope and c is the constant. अच्छा, अब लेट्स से कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ की, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये ड्रॉ की, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये ड्रॉ की, दूसरी स्ट्रेट लाइन मैंने ये ड्रॉ की. सो आई कैन ड्रॉ मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, और ये मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस विच आई हैव ड्रॉन, इन स्ट्रेट लाइंस के दरमियान जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस है, that is only of these two parameters, which is your slope and the constant. So जैसे मैं slope और constant को change करूँ, right, I'll get different line. Okay, so इन तमाम lines के अंदर x is my input, y is my output. x और y तो change नहीं हो रहा क्योंकि input and output are given to me. The only thing that is changing is the slope and the constant. अच्छा, so let's just look at this aspect now. So I've got this line, then I've got another line here, then I've got another line here. So, and you all know the straight line equation. The straight line equation is this. ठीक है, और इन तीन equations के अंदर what is the factor that is changing? What is the factor that is changing in these three lines? जी, आयशा ने कहा W चेंज हो रहा है. Anyone else? X चेंज हो रहा है. तो ठीक है, नहीं, मैंने कहा x आप चेंज नहीं, x जो है दैट इज एक्चुअली फिक्स्ड. ठीक है, आपको एक सेट ऑफ इनपुट्स दिया हुआ है और एक सेट ऑफ आउटपुट्स दिया हुआ है, आप उसको तो चेंज नहीं कर रहे. उजाला का ख्याल है c चेंज हो, c इज अ कांस्टेंट, राइट. सो c इज अ कांस्टेंट. हर तीनों लाइंस के लिए c कांस्टेंट होगा. दैट मीन्स कि इस लाइन के लिए c की एक वैल्यू होगी, इस लाइन के लिए भी c की एक वैल्यू है और इस लाइन के लिए भी c की एक वैल्यू है. But for each line the value of c is changing, is different. यहाँ पे हो सकता है c की कोई एक वैल्यू हो, इस केस के लिए c की डिफरेंट वैल्यू होगी, इस केस के लिए c की डिफरेंट वैल्यू होगी. The slope in this, in all these three lines is not changing. Now if you look at the slope here, the slope is not changing. ठीक है, slope जो है तीनों lines के लिए almost same है. So that means कि w इन तीनों lines के लिए almost same है. ठीक है, क्योंकि इसकी स्लोप चेंज नहीं हो रही, ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रही. द थिंग दैट इज चेंजिंग इज c. अच्छा, लेट मी
talk about, let me just draw another line here, set of lines. So let's say कि एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, oh sorry, स्ट्रेट लाइन नहीं है, just excuse me for that, और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी. अब इन तीनों assume कि all of these three or all of these lines are passing through the center. अब इस केस में क्या चेंज हो रहा है? इस केस में इन तमाम लाइंस के लिए C जो है that is constant. In other words, जो constant C जो है that is actually what you also call as the Y-intercept. ठीक है, तो इस केस में ये ज़्यादा easily आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि दिस इज द Y-intercept, दूसरे केस में Y-intercept ये है, तीसरे केस में Y-intercept ये है, दैट इज चेंजिंग, स्लोप चेंज नहीं हो रही. इस केस के अंदर Y-intercept जो है ना वो जीरो है. ठीक है, C which is the Y-intercept that is zero because every line is passing through the center. तो क्या चीज चेंज हो रही है? द स्लोप. ठीक है, द स्लोप इज चेंजिंग इन ऑल ऑफ दीज लाइंस. ठीक है, सो दैट मीन्स कि इन लाइंस के अंदर क्या होगा? W चेंज हो रहा है, और इन लाइंस के अंदर जो है वो C चेंज हो रहा है. So that means that by changing the slope and by changing the Y-intercept, which is C, you can change the structure of the line. Right? Okay. So you can do this. Okay. So let's come to that example. जिसमें आपके पास ये एक पॉइंट है, ये एक क्लास है, और फिर आपके पास एक और क्लास है. ठीक है. If I want to fit a line that separates out these two classes, what can I do? I can start randomly and I can start with one line. Let's say कि मैंने ये एक line fit कर दी. इस line की just excuse me a minute. So I've got this one line. Let's say I start, I don't know the exact line that separates out these two classes, लेकिन मैं एक इस line से start कर, मैंने ये line निकाली और मैंने इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश की, फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या ये लाइन दोनों क्लासेस को सेपरेट आउट करती है या नहीं करती. द आंसर विल बी नो, क्योंकि इसके ऊपर दोनों क्लासेस मौजूद हैं, इसके नीचे कोई भी क्लास मौजूद नहीं. So what is the next thing that I can do? I can fix the slope, right? I can fix the slope and I can start changing the value of C. तो वैल्यू ऑफ C को चेंज करके मैं देखता हूँ, एक लाइन मुझे यहाँ पे मिल सकती है, एक लाइन मुझे यहाँ पे मिल सकती है, फिर एक लाइन मुझे यहाँ पे मिल सकती है. I can have another line here. मैं सिर्फ Y-intercept को चेंज कर रहा हूँ. So you can see that none of these lines is capable of separating out these two classes from each other, set of data. लेकिन एक चीज बड़ी आसानी से हो सकती है कि जैसे ही मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, I can try to see, I can see that कि क्लासिफिकेशन नहीं हो रही, सेपरेट आउट दोनों क्लासेस को मैं नहीं कर पा रहा. लेकिन जैसे ही मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो कुछ पॉइंट्स जो है ना वो क्लासीफाई मैं कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल ये लाइन जो है, इसके ऊपर और नीचे आपको अब स्प्लिट नजर आ रहा होगा बिटवीन द टू classes, but still I am unable to find out a line in tamam lines में से that completely separate out the two classes from each other. So what I can do is that I can select, let's say this line, I can fix the value of C here, ठीक है, and then start changing the slope. अब इस line की slope को मैं change करना शुरू कर देता हूँ. तो जब मैं slope को change करूँगा
तो दिस लाइन फॉर दिस वाई इंटरसेप्ट, जब मैं स्लोप को चेंज करना शुरू करूंगा तो आई विल गेट one line which is passing through the same y-intercept, in this case इस तरह से separate out होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, right? So again you can find out कि मैं C को fix करके W change करने की कोशिश कर रहा हूँ, so I'm unable to again find a line, ठीक है, or then I can alternate between the two. So what I can do is that in a hope to find out a line that separates out these two classes, I'll keep on changing C and W. Okay. So I'll find out C, change W, then change W and find out another C. And this would continue, right? And this would continue in a hope that I come up with a line that is of this form, right? So here you have one class, here you have another class, in a hope that I get a line that passes through the data in this format which I've just given you. ठीक है, और इसके लिए y-intercept जो है that would be given to you, इधर से आपके पास x-intercept भी आ जाएगा which it passes or crosses this and has a slope of this. So primarily in order to find out a classifier that separates out the two classes for me, I have to find out a line. I have to find out a line with an appropriate W and with an appropriate C so that the two classes are separated from each other. This is how a simple neuron is actually, or a simple classification problem would look like. Okay, in order to put it in mathematical terms, what I can do is that there are two variables here. The first variable, when I say parameters, variables, I mean parameters. There are two variables, x and y, but parameters that I can change, they are c and w. Okay. So let's say कि आपके पास inputs कुछ आ रही, and these inputs are, let's say x1, x2, x3, x4. There are multiple inputs that are coming in, और आपके पास एक output आ रही है. Let's call that output as y. और यहाँ पे आपके पास inputs आ रही हैं which are w1, x1, x2 and x3. Let's say तीन inputs आपके पास आ रही हैं, right? And the equation that I'm trying to model is wx plus c. ठीक है, wx plus c. So यहाँ पे every input here would have some, this is how a neural network would actually be modeled, right? Primarily, the simplest of all neural network is trying to model this straight line. Okay, so a single neuron would have multiple inputs coming in, and these inputs are represented by x. Then they get multiplied with the slope. In case of a neuron, we will not call it a slope, we'll call it a weight. Okay, we'll call it a weight because that is something that is being changing here. Okay, so w1, w2 and w3 are the weights, and plus there is a constant. Okay, we can assume that this constant multiplies with an input 1. ठीक है, so x जो है वो multiply होता है w के साथ, और c जो है that multiplies with an input which is let's say 1. So I can add an extra input here with 1, and I can actually call the weight of this input as c. Achha, if I write a mathematically, and what is this circle that is representing here? This circle is primarily representing the summation, right? Summation, and then you can also put some thresholding on that. ठीक है, और thresholding का मतलब क्या होगा? Thresholding का मतलब ये होगा कि if the value of the summation is greater than a particular value, we'll say कि it belongs to class 1, otherwise it belongs to class 2. ठीक है, so we can have some thresholding here,
and that thresholding is represented by some sort of a function, which is represented by which is represented by f here. So that function in terms of neural networks is called the activation function. Okay, so you apply some sort of activation function in order to threshold it. Threshold का मतलब क्या है? Threshold का मतलब ये है कि you want to convert it into an output which is either 0 or 1. तो आपको कोई function f apply करना पड़ेगा which converts your aggregated inputs into the desired range of your outputs. ठीक है, 0 or 1. ठीक है. So this is the function, or this is the mathematical representation of a neuron. And this type of a neuron, if you put an appropriate value of W's and an appropriate value of C, this would give you a straight line. Right? This would give you a straight line. Okay. So let's just further discuss this. So let's say कि एक न्यूरॉन आपके पास है. This neuron can give you a straight line. Let's say ये एक straight line है जो कि एक न्यूरॉन दे रहा है. ठीक है. And when I say it gives you a straight line, that means that you have got an appropriate W value and a C value that would give you this straight line. ठीक है. First करें this neuron. You have another neuron here. Let's assume कि एक और न्यूरॉन आपके पास पड़ा हुआ और यहाँ पे आपके पास let's assume कि आपके पास एक ही इनपुट है which is represented by X. This input goes in this neuron and this input goes in the same input goes into another neuron. ठीक है जी. और यहाँ पे आपके पास a third neuron is present here. इन दोनों न्यूरॉन्स की इनपुट आपके पास एक थर्ड न्यूरॉन में जा रही है and here you are getting your Y. Right. So let's call this as neuron 1 and let's call this as neuron 2. So there are how many ways in which you can reach from X to Y? In other words, there are how many paths that are available here? Two paths, of course. One is this and the other one is this. And graphically, what would these represent? These two paths represent? Graphically, what are they representing? So this path here, what is this path representing? No, the complete path from X to Y. What is this representing? It is in a functional form. Lekin graphically, what is this representing? What is this function representing? Okay. Anyone? Masa? Ujala? Aina? सर ये पूरा प्रोसेस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं आ रही इसकी. अच्छा, लेट्स से कि मैं ये जो path 1 है, ठीक है, you are giving some input and that input is being processed through this part और आप Y achieve करते हैं. ठीक है. और फिर वही इनपुट इस पाथ के थ्रू प्रोसेस होती है. यानी फर्ज करें यहाँ पे एक वेट है W1, यहाँ पे एक और वेट है which is W2, यहाँ पे आपके पास एक और वेट आ जाएगा
और यहाँ पे एक और वेट आ जाएगा. लेट मी कॉल दिस एज W3 and W4. So what is this path representing? This is representing, let's say, X, W1X. ठीक है, right? So W1 into X, and then you will actually be applying some activation function on that, जो कि F1 है, which is this activation function. And this is the output which you get here. And then this output becomes an input to this neuron. ठीक है? For a while, just forget about W2 and W4. Let's forget about कि W4 exist करता है. हम अभी ये सिर्फ assume कर रहे हैं कि सिर्फ ऊपर वाला path exist कर रहा है. So this would get multiplied with W3. ठीक है, और जब ये W3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, you will be here somewhere, और उसके बाद इस न्यूरॉन का एक्टिवेशन फंक्शन है, that would be applied on it. Let's call it F prime. Let's call it F prime. F prime is this activation function, और जब ये आप एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, you get your estimated output, which is Y bar. ठीक है, so this whole thing, और ऑब्वियसली इसमें हम अगर वो कांस्टेंट को अभी मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन अगर आप कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं, फर्ज करें कांस्टेंट भी आप ऐड कर देते हैं, तो you will get some constant here. Let's call it C. So this is the complete flow of this path. ठीक है, and what is this representing? What is this Y prime representing? ये जो इक्वेशन है, what is this representing? This path here is representing a straight line. ये एक straight line को represent कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब if I process this information here completely, I'll actually determining a straight line here. And what is this path representing here? This path is again representing another straight line. So these are two straight lines that this path, these two paths are representing. ठीक है, और यहाँ पे आप aggregate कर रहे हैं, that means कि you are combining these two straight lines together. So in other words, if I've got this type of a structure, the first path might give me a straight line of this form. The other path could give me a straight line of this form. And what is this neuron doing? This neuron is actually combining these two straight lines together into a single decision. ठीक है, so let's say class 1 इधर है और एक class आपके पास इधर है. So what would be the decision? The decision would be that both the classes are above this line and class 1 is below this line and class 2 is above this line. ठीक है, अब इस केस के अंदर आपको ये दूसरी लाइन की जरूरत नहीं है in order to classify. You don't require this second line. That means a single neuron would help you or would be able to separate out these two classes for you. But there could be a situation जहाँ पे एक straight line से आप दोनों classes को separate out नहीं कर सकेंगे. ठीक है, and for that let me give you an example for that. And the example for that would be कि फर्ज करें आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे, ठीक है, एक ये है और यहाँ पे आपके पास क्रॉसेस हैं. फर्ज करें इस तरह की क्लासिफिकेशन है, आपके पास डेटा है. तो अगर मैं एक न्यूरॉन लगाता हूँ, दैट मीन्स कि सिर्फ एक पाथ को फॉलो करता हूँ, दैट मीन्स कि आई हैव गॉट दिस न्यूरॉन, यहाँ पे इनपुट आ रही है और इस न्यूरॉन की कुछ आउटपुट आ रही है मेरे पास. ठीक है, सो दिस इज माय इनपुट एंड दिस इज माय आउटपुट. दिस टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर विल गिव मी अ सिंगल स्ट्रेट लाइन.
सो लेट सपोज मैंने ये स्ट्रेट लाइन निकाल ली, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो है वो दोनों क्लासेस को completely separate out नहीं करती. Therefore, I have to have another straight line. Another straight line could be of this form. अब ये दोनों क्लासेस सेपरेट आउट हो रही हैं. सो आई कैन से कि बिलो दिस लाइन एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन यू हैव क्लास 1, above this line and on the right of this line you have, let's say, another class, or above this line and on the left of this line you have class 2. So you have got multiple decisions here. एक डिसीजन आपके पास होगा इस रीजन के लिए, एक डिसीजन होगा आपके पास इस रीजन के लिए, और एक डिसीजन आपके पास होगा इस रीजन के लिए. So in order to separate out these two classes, you don't require, or you can't really separate out these two with a single neuron. You have to have multiple neurons here. जब मैं न्यूरॉन की बात करता हूँ दैट मीन्स कि एक स्ट्रेट लाइन से आप दोनों क्लासेस को सेपरेट आउट नहीं कर सकते. यू हैव टू हैव मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस. जब मुझे मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस चाहिए होंगी तो उस केस के अंदर एक न्यूरॉन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक न्यूरॉन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. सो आई हैव टू हैव टू न्यूरॉन्स, और जब दो न्यूरॉन्स होंगे तो द सेम इनपुट गोज टू अनदर न्यूरॉन, और एक उसकी एक इंटरमीडिएट आउटपुट निकलेगी. लेट मी कॉल दिस इंटरमीडिएट आउटपुट एज लेट्स से y1 और y2. ये दो इंटरमीडिएट आउटपुट्स निकलेंगी बिकॉज यू हैव अ सिंगल आउटपुट हियर. आपके पास एक सिंगल आउटपुट आ रही है, तो इन दोनों आउटपुट्स को आपने दोबारा से फिर एग्रीगेट करेंगे एंड यू विल गेट अ सिंगल आउटपुट व्हिच इज कॉल्ड y इन दिस केस. और ये जो एग्रीगेशन आप इस लेवल पे हो रही है, this aggregation is actually giving you these different regions. ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि y1 अगर इधर होगा और y2 अगर इधर होगा तो फिर आपके पास ये क्लास 1 होगी. अगर y1 और y2 का ये कॉम्बिनेशन होगा तो फिर आपकी ये डिफरेंट क्लास होगी. So what are these paths representing? These paths here are representing what? These paths here are representing decision boundaries, multiple decision boundaries. ठीक है, और these are representing straight lines. ठीक है, तो अगर एक, so I hope this is clear. इसमें कोई confusion तो नहीं है. Okay, great. जी आयशा, is this clear जी? Ujala, thank you. Yes, okay. So let's just say कि अगर अब मेरे पास एक स्ट्रक्चर आता है, फर्ज करें आपके पास दो इनपुट्स आती हैं x1 और x2. ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 3 न्यूरॉन्स आते हैं और एक आउटपुट आती है. ठीक है, एंड दिस इज अ फुली कनेक्टेड network. This is the type of structure that you have, and here I've got this y here. So what is this representing, this architecture? How many decision boundaries? जी, 6. Okay, so एक आपके पास ये पाथ है. So you simply count the number of paths that you have got. एक आपके पास ये पाथ है, then you have got another path here. ठीक है, similarly आपके पास multiple paths आपके पास exist करते हैं. Okay, so यहाँ पे आपके if you just look at this particular scenario,
नाउ रिमेंबर ये फुली कनेक्टेड नेटवर्क था, पिछले वाला जो था उसमें मैंने एक ही इनपुट अज्यूम किया, यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स जो है ना वो मैंने उनको 2 कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास एग्रीगेशन हो रही है ऑफ मल्टीपल पास दैट यू आर गेटिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप जो इंटरमीडिएट आउटपुट है ऑफ ईच ऑफ द न्यूरॉन, इंटरमीडिएट आउटपुट है ऑफ ईच ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है, यू आर कंबाइनिंग दैट, ठीक है जी, यू आर कंबाइनिंग दैट। और कितनी इंटरमीडिएट आउटपुट्स को आप कंबाइन कर रहे हैं? 3। देयर आर 3 इंटरमीडिएट outputs that are being combined here. That means कि in simple terms अगर मैं बात करूं तो this neuron here, this neuron here, this neuron here will give me one decision boundary. This neuron here will give me another decision boundary represented by this line here, and then this line here, and then this line here. So in simple terms, जो intermediate outputs मेरे पास आ रही हैं, there are 3 intermediate outputs. That means कि at least this would give me 3 decision boundaries, at least. ठीक है? And why I'm saying that? Because this is a fully connected network. ठीक है जी? और इसमें से if I look at these, if I look at the multiple paths that I can get in order to get this intermediate outputs, you rightly pointed out that there are 6 paths that are available in this particular case. ठीक है, तो एटलीस्ट 3 देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के साथ ये मेरे पास 6 देगा, बट दे आर नॉट लिमिटेड टू 6। द रीजन फॉर दैट इज कि यू कैन हैव डिफरेंट स्लोप्स एंड डिफरेंट वेट्स फॉर दैट, सो even higher number could be achieved in this particular case, ठीक है। सो हाई डायमेंशन डिसीजन बाउंड्रीज या मल्टी डायमेंशनल डिसीजन बाउंड्रीज आप रीच कर सकते हैं if you have this sort of an architecture. In other words, you can solve some complex problems. Okay. So this was the basic concept that we I just wanted to highlight in case of the neural structure. We'll not go into the details of further details into that, but I just want to highlight here in this case the neural architecture किस तरह का होता है. Okay, so let's say कि I'll come back to this discussion again. Can I embed, I mean फर्ज करें कि ये आपके पास एक इनपुट आ रही है और फिर आपके पास जो है यहाँ पे आउटपुट आ रही है. So this is, let's say, X and this is Y, and here you have got a neuron. And what is this neuron representing? Neuron is primarily representing some sort of threshold on your aggregated input, okay, and thresholding on W X, some sort of thresholding is being done here, ठीक है जी. और यहाँ पे आउटपुट, लेट्स अज्यूम कि आउटपुट या 1 आएगी या -1 आएगी, लेट्स अज्यूम दैट. और मेरे पास इनपुट जो है वो भी कोई इनपुट्स हैं, देयर इज अ सेट ऑफ इनपुट्स दैट आई हैव गॉट, ठीक है. कैन आई रिप्रेजेंट दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ अ रूल? अ रूल, इफ देन रूल, क्या मैं ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको? With the help of a rule. That means कि can I say कि if, yes, and how can I do that, Aisha?
ओके, आई मीन गिव मी अ स्टेटमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, इफ डैश देन डैश, इन डैशेस की जगह क्या आएगा? If x is equal to 2, then y is equal to t. It could be anything. अच्छा, I mean I want an exact thing in this case. जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके मुताबिक. So let me give you then part. Then part में क्या होगा? Then y, let's suppose y is equal to 1. और एक और रूल मैं लिख सकता हूँ, इसमें कह सकता हूँ then y is equal to -1, क्योंकि यही मुझे दो आउटपुट्स चाहिए ना. तो बिफोर देन क्या आएगा? यहाँ पे क्या आना चाहिए? इस जगह पे क्या होगा? इस जगह पे, और यहाँ पे क्या होगा? और क्या हो सकता है? ओके, लेट मी जस्ट गिव यू. यहाँ पे आपके ये एक्टिवेशन फंक्शन या थ्रेशोल्डिंग आएगी. यू कैन से कि इफ दिस फंक्शन gives you a value greater than 0, then y is equal to +1. If this function gives you a value less than 0, then your output is -1. तो आप ये दो रूल्स बड़ी आसानी से बना सकते हैं. These are the two rules. So every neural structure or every neuron is primarily representing some rule, right? Every neuron is actually representing a rule. Okay, so let's say, so I hope this is clear, G. um, um, G, Aina, Awais, Musab, is this clear, G? Afira? Okay, great. So a neuron is primarily representing a rule. ठीक है, तो फर्ज करें मेरे पास एक इनपुट है एंड आई एक्चुअली रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, और मेरे पास दो न्यूरॉन्स हैं. ठीक है, दिस इनपुट गोज देयर, दिस इनपुट गोज देयर, एंड देन आई हैव गॉट एन आउटपुट न्यूरॉन, और यहाँ पे मेरे पास y आ रही है, और देन दे आर कनेक्टेड टुगेदर. So what is this architecture representing? Okay, so how many rules can this architecture represent? ये जो अभी मैंने आपको बताया. So just find out the paths. इसमें कितने paths हैं? There are two possible paths here. ठीक है, एक path ये है, the information could flow through this path, the information could flow through this path. So every path is associated with, let's say, these two types of rules. ठीक है, so यहाँ पे मेरे पास दो possibilities आ जाएंगी, इस जगह पे मेरे पास दो possibilities आ जाएंगी, या इसकी intermediate output जो है वो कुछ बेस्ड अपॉन दिस एक्टिवेशन. अगर ये एक्टिवेशन पॉजिटिव है तो यहाँ पे आउटपुट कुछ और होगी, अगर ये एक्टिवेशन नेगेटिव है तो यहाँ पे आउटपुट कुछ और होगी. सिमिलरली यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन जो है, अगर ये एक्टिवेशन पॉजिटिव है तो यहाँ पे आउटपुट कुछ और है, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे आउटपुट कुछ और है. एंड आई एम कंबाइनिंग दीज टू टुगेदर, दीज टू एक्टिवेशंस. फर्ज करें यहाँ पे एक्टिवेशन पॉजिटिव आ गई, यहाँ पे एक्टिवेशन नेगेटिव आ गई. ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट कुछ और आ जाएगी. अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आउटपुट कुछ और होगी, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आउटपुट कुछ और होगी. ठीक है,
अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, या अदरवाइज ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मेरे पास आउटपुट कुछ और आ जाएगी। ठीक है, सो बाय कंबाइनिंग दीज इंटरमीडिएट आउटपुट्स यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट मल्टीपल रूल्स है। ठीक, so this architecture here is primarily representing again different rules. कितने रूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वुड डिपेंड कि कितनी एक्टिवेशंस आपके पास आ रही हैं। इफ इट इज अ कंटिन्यूअस सॉर्ट ऑफ आउटपुट्स दैट आर कमिंग इन, तो उस सूरत में दिस कुड रिप्रेजेंट मल्टीपल रूल्स। लेकिन एटलीस्ट ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को तो शायद रिप्रेजेंट कर ही सकता है, जिसमें इंटरमीडिएट आउटपुट्स के परस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। फर्ज करें ये पॉजिटिव है, so one could be positive, and this is the intermediate outputs that I'm talking about. The other could also be positive. ये पॉजिटिव और ये इंटरमीडिएट आउटपुट नेगेटिव हो सकती है, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो सकती है। So at least these 4 combinations can actually be represented here. So in short, what I am trying to say here is कि किसी भी न्यूरल आर्किटेक्चर को आप अगर लें, उस न्यूरल आर्किटेक्चर को आप रूल्स की फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं। That's what I'm trying to say here. So okay, so Musab का question है कि how come if part is not just, let's say x is some rule and y would be the fact, and intermediate layer is your membership function. Then otherwise, if is very costly in terms or layer, Masab, I'm unable to like understand कि आप क्या पूछना चाहते हैं. If you can open up your mic और वहाँ पे अगर आप So previously you were saying that some activation function would be your rule, right? So my question is that it shouldn't be just the X, and otherwise, let's say X is processing through some activation function, and after that it's giving you some fact Y, right? जी जी. अदर सेंस इज दैट कि अगर हम इसको एक्स पे रखते हैं तो इट परफेक्टली मेक सेंस कि हमारे पास सम एक्स रूल्स आ रहे हैं और उनकी बेसिस पे हम आफ्टर प्रोसेसिंग जो है वो हमें वाई जनरेट कर रहा है. लेकिन अगर आप इसको टोटली एक्टिवेशन फंक्शंस कह रहे हैं कि एक्स जो है वो टोटली कंसिस्ट ऑफ आफ्टर प्रोसेसिंग इट्स द एक्टिवेशन फंक्शन, तो ये कुछ चीज़ सेंस ही बन रही कि आपका टोटल पार्ट इफ पार्ट जो है वो कंसिस्ट कर रहा है कि वो टोटल न्यूरल नेटवर्क को कंसिस्ट कर रहा है. ये कुछ समझ नहीं आई इस चीज़ की. अच्छा चल, मैं इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ. आपका ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है ना, एक्टिवेशन फंक्शन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग योर इफ पार्ट. एक्टिवेशन फंक्शन की जो आउटपुट है वो आपके इफ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है. एंड व्हाट इज द आउटपुट? वो आउटपुट डिपेंड कर रही है एक्स के ऊपर और डब्ल्यू के ऊपर. इन दोनों की आप प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसको थ्रेशोल्ड कर रहे हैं. दैट मीन्स थ्रेशोल्ड करने का मतलब क्या है कि फर्ज करें प्रोडक्ट आपके पास 5 आ जाती है. ठीक है, तो फंक्शन अप्लाई करने का मकसद सिर्फ ये है कि दैट विल टेल यू कि अच्छा ये एक पॉजिटिव आउटपुट है. फंक्शन सिर्फ ये कर रहा है. जो फंक्शन की कैलकुलेशन है उसके अंदर एक्स इन्वॉल्व है. सो एक्टिवेशन सो इफ पार्ट इज जस्ट द एक्स और इन बिटवीन पार्ट ये जो है वो आपके पास मेंबरशिप फंक्शन ही है, राइट? मेंबरशिप फंक्शन है, लेकिन मेंबरशिप फंक्शन किस पे अप्लाई हो रहा है? ऑब्वियसली वो डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू उसका एक्स है. वेट तो वगैरह. दैट मीन्स कि इनडायरेक्टली आप इनपुट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. ऑलराइट, ठीक. ठीक है, तो इट्स नॉट जस्ट द एक्टिवेशन फंक्शन, इट्स ओके, एक्चुअली थैंक इनपुट टाइम्स द वेट.
जिसको अच्छा मैं इस एक्टिवेशन फंक्शन को ड्रॉप कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ये है ही नहीं, फर्ज करें मैं ड्रॉप कर देता हूँ, एक्टिवेशन फंक्शन मेरे पास जो है वो मैं करते ही नहीं हूँ, थ्रेश होल्डिंग नहीं करता। तो अब आपका इनपुट पार्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? W और X के ऊपर, उनकी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ओके। जो F अप्लाई किया जा रहा है ना, वो सिर्फ थ्रेश होल्डिंग के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि F का मकसद क्या है। आप इस रूल को इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इफ the product of X and Y, the product of X and W is positive, तो Y 1 होगा, अगर वो नेगेटिव है तो Y -1, ठीक है। यस सर, ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन का भी थोड़ा सा इशू था, बस आई इज क्लियर नाउ। So I think तो you have to be very clear in this case कि हम एक्टिवेशन फंक्शन को सिर्फ नहीं ले रहे, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर रहा है W और X के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। और अगर आप एक पाथ चूज करते हैं तो WX का प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होगा, अगर तो आप दूसरा पाथ चूज करते हैं तो WX का प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होगा। जैसी X आप चेंज करेंगे आपका W चेंज, आप जैसी X चेंज करेंगे आपकी थ्रेशोल्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपका इफ पार्ट चेंज हो जाएगा, उसकी बेस के ऊपर आपका वाई पार्ट चेंज हो जाएगा। So the idea here is कि you can actually represent a neural structure, कोई भी neural structure आप उठाते हैं, that neural structure is inherently embedding a rule in it, not just a single rule but multiple rules. जितने आपके रीजन्स बन रहे हैं ना आपकी डिसीजन बाउंड्रीज की वजह से, उतने ही वो रूल्स रिप्रेजेंट करेगा। फर्ज करेंगे ये एक डिसीजन बाउंड्री है आपके पास, इस केस में आपका जो न्यूरल नेटवर्क जो आपको ये एक सिंगल लाइन दे रहा है, ये प्राइमरीली एक रूल रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज सेइंग कि इफ द थ्रेशोल्डिंग, दैट मींस कि अगर आपके पास आउटपुट जो है या जो f ऑफ WX जो है, इफ इट इज अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, तो फिर आउटपुट इस लाइन से ऊपर होगी, अदरवाइज आउटपुट लाइन से नीचे होगी। सो दिस इज एक्चुअली अ रूल। सो डिसीजन बाउंड्री जब आपने निकाली, दैट मींस दैट यू हैव एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड अ रूल, राइट। तो जैसे मैं न्यूरॉन्स बढ़ाता जाऊंगा, आई एम मेकिंग माई रूल क्लासिफिकेशन रूल मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फर्ज करें मेरे पास दो डिसीजन बाउंड्रीज आती हैं, एक डिसीजन बाउंड्री ये है और एक डिसीजन बाउंड्री ये है। तो यहाँ पे आई कैन हैव एटलीस्ट 4 रूल्स, एटलीस्ट 4 रूल्स, ठीक है। एक रूल इस रीजन के लिए होगा, 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 एक रूल इन इस पूरे रीजन को कंबाइन करके मैं एक डिफाइन कर सकता हूँ, इस पूरे रीजन को कंबाइन करके मैं एक रूल डिफाइन कर सकता हूँ। सो एक न्यूरल आर्किटेक्चर जो कि मुझे दो डिसीजन बाउंड्रीज दे रहा है, आई कैन इंटरप्रेट दैट एज मल्टीपल रूल्स। That's the point which I'm trying to make, right? I hope this clarifies the concept behind a neural network. So now you look at a neural network from a different perspective. ठीक है, अवैस, आइना, फिरा, okay, great. So what our aim here is that we want to embed a fuzzy rule into a neural architecture. That's what neuro fuzzy systems would mean. एक न्यूरल आर्किटेक्चर आपको दिया हुआ है, उसमें हमने फजी रूल को इम्बेड करना है या इंटरप्रेट करना है फजी रूल को उसमें से, ठीक है। एंड एनफेस इज अ मॉडल दैट एक्चुअली डज दैट, ठीक है। और इसकी जो डिटेल्स हैं, वील डिस्कस दोज डिटेल्स इन नेक्स्ट सेशन। लेकिन the idea of this complete thing would be कि हमने एक न्यूरल आर्किटेक्चर को ट्रेन करना है, और उस न्यूरल आर्किटेक्चर को ट्रेन हमने इस तरीके से करना है कि वी कैन इंटरप्रेट फजी रूल्स आउट ऑफ इट। जैसे हमने एक स्टैंडर्ड रूल्स यहाँ पे इंटरप्रेट किए हैं ना आउट ऑफ अ न्यूरल आर्किटेक्चर,
एनफिस वुड डेवलप न्यूरल आर्किटेक्चर जिसमें से हम फजी रूल्स को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, यानी उसमें से हम फजी रूल्स निकाल सकेंगे. रिमेंबर फजी रूल्स क्या थे कि फर्ज करें टेम्परेचर के केस में कि इफ टेम्परेचर इज हॉट देन थर्मोस्टेट सेटिंग ये होनी चाहिए, लो, मीडियम, हाई होनी चाहिए. तो वील ट्राई टू एम्बेड लिंग्विस्टिक वेरिएबल न्यूरल आर्किटेक्चर एंड सी कि ये कैसे काम करते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट टाइम वील सी एंड वील लुक इनटू दिस स्ट्रक्चर और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है. ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो आप फजी रूल बेस्ड सिस्टम्स को थोड़ा सा रिवाइज करके भी आइएगा. व्हाट आई डू इज कि मैं इसकी एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो न्यूरो फजी आर्किटेक्चर्स के ऊपर, खास तौर पे एनफिस के ऊपर, आई विल अपलोड दैट और नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो उसको देख के आइएगा. ठीक है, सो आई विल अपलोड दैट एंड दिस वुड आल्सो इन अ वे कॉम्पनसेट फॉर द लेक्चर दैट वी मिस्ड ऑन मंडे. ठीक है, तो I'll upload that recorded video on Anfis. You should go through that video, and then in our class in our next class we'll discuss that in detail. Okay, thank you. Is there any question so far?